हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। नाम मुबashir। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। हाउ 40,000 पीपल आर फेड डेली ड्यूरिंग बाबा मिलान इन राजस्थान इंडिया। मतलब राजस्थान इंडिया में एक जगह, मतलब बाबा मिलान, ये मतलब शायद कोई, अब क्या है भाई, ये धार्मिक जगह। तो उधर रोज 40,000 लोग खाना खाता है। 40,000 खाना लोग उधर रोज डेली खाता है। वो खाना कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या कुछ होता है, हम खुद बाबा मिलान फर्स्ट टाइम देखने लगे, हमें भी ताकि इसकी इन्फॉर्मेशन पता लगेगी। बिल्कुल देखते हैं कैसे भाई 40,000 लोग, इतना खाना कैसे बनता है, क्या सीन होता है। तो बिना किसी देरी के देखते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। This is the Shantivan complex, a mega kitchen in Mount Abu, Rajasthan, belonging to the spiritual organization Brahma Kumaris. The kitchen is run entirely by volunteers who cook enough food to feed 40,000 people a day. The operation spans 4 floors and includes 14 dining halls, which can seat 15,000 people at a time. We visited the complex during a special celebration called Baba Milan to see how it prepares these meals in such big batches. Work in the kitchen begins at 5:30 a.m. with hundreds of volunteers cutting vegetables and peeling steamed potatoes by hand. During Baba Milan, 2,500 volunteers need to have prep and cook the festival meals. But that isn't something Banu Prakash, who's head of the bread department, is worried about. कितनी भी सेवा होती है तो हम देखते हैं कि समय पे सेवा के जो सहयोगी है वो भी मिल जाते हैं। The cut vegetables are loaded onto crates and wheeled into the main kitchen, where they're washed again in large metal containers and strained. All of the vegetables the kitchen uses are seasonal and bought directly from farms. And the food is prepared following the Sattvic diet, or the Yogi diet, which is rooted in Ayurvedic practices. Today the chefs are cooking rajma, vegetable sabzi, chapatis and teplas. While most of the prep work is done by hand, some vegetables are processed using machines. Crates of tomatoes are pureed and spinach is chopped finely. On the other side of the kitchen, another team uses that tomato puree to make a sauce. They pour 5 liters of peanut oil into a giant pot. Then they mix in whole wheat flour, curry powder, handfuls of cumin seeds, asafoetida, bay leaves, and chili powder. Buckets of pureed tomatoes are poured inside and tossed together with garam masala, a common Indian spice mixture. The chefs then scoop the sauce out with buckets and place it into large metal containers so that it can be delivered to another section of the kitchen. The tomato sauce is rolled to Chef Nilesh Bahi, who has been working here for 17 years and is in charge of making rajma, a curry dish made with kidney beans. वैसे मैं राजस्थानी हूँ, लेकिन यहाँ आकर ही मैं इतना राजमा जो बनता है यहीं सीखा और मैं बनाता भी हूँ अभी। मेरा फेवरेट है, तो काश मैं राजमा बहुत दिल से बनाता हूँ। He soaks the kidney beans for 10 to 12 hours before boiling them in this pot for 3 hours. Once they're cooked, Nilesh uses a small scooper to examine the beans' tenderness and gauge the broth consistency. When the beans pass the test, he tips the pot and scoops in 400 kilograms of the tomato sauce. He then fills the pot with more water so it achieves the same consistency he had before the tomatoes. This is something Nilesh determines with his eye. On the side, he mixes oil, cumin, coriander, garam masala, asafoetida, gram flour, and chili powder into a bucket. He then pours this into the pot and adds salt. After he adds the first round of spices, he tastes the rajma and decides if it needs more flavor. Once Dinesh approves of the taste, he mixes in finely chopped spinach. और जो आप देखेंगे बर्तन
जो आप देख, उसका कैपेसिटी 1200 लीटर का है। 1200 उस बर्तन में हम लोग जब पूरा भर के बर्तन बनाते हैं, उसमें 7000 लोगों का दाल या राजमा बन जाता है। एक ये बर्तन एक 7,000 बर्तन All of this 7,000 food लोगों को requires an खिलाता है। immense वाह, amount of energy. 1200 लीटर। Since 1990, the kitchen has used a concentrated solar array on top of its roof ये to solar heat solar water हाँ। and generate steam, which और can be कभी solar used to से cook सब most of कुछ the करते food हैं। the kitchen makes. The cooked rajma is drained through a spigot into smaller containers, which are then covered and wheeled to the dining halls. 40,000 लोग यार। One of the most Kate. important dishes made in the kitchen is sabzi, a mixed vegetable Sabzi. dish that varies depending on the vegetables इसके अंदर गोभी available वगैरह that सब day. कुछ Mix है। Mix सब्जी, सब्जी। Cooks heat oil in a massive pot along with Oil cumin में seeds, सारा बनता है curry भाई। leaves, हाँ, and peanut asafoetida. oil में। हेल्दी है बहुत यार। हाँ। Next, they add turmeric, cut chilies, and chopped bottle gourd. यार भारत में समाज सेवा कितनी होती है बहुत ज्यादा होती है They यार। mix लोग everything देखो, together मतलब before भूखा adding पेट in नहीं chopped सोता है। potatoes, ये चीज बहुत अच्छी है। लोग ये इतना Garlic करते हैं। gourd. हाँ भाई, ये संस्थाएं बनी हुई हैं। देखो भाई, and देखो ना। cauliflower. भूखों को पेट भरने के लिए। Then they add water and season the mix कैसे with बाबा salt मिलान के and बारे chili में थोड़ा सा powder. एक्सप्लेन करना कमेंट सेक्शन में, बिल्कुल। हम जानना चाहते हैं। Next come green beans, मटर, a pot full of tomato sauce, बस टमाटर Peas. जो सारा कुछ करता है। cut green bell क्या peppers, कुछ डलता है यार? कितना बड़ी and मिक्स सब्जी shredded है ना भाई। carrots. और ये अच्छा कैरेट गाजरें। It's finished off with a generous amount of salt. नमक। नमक ऊपर डालो। भाई ये तो Like बड़ा है। every other dish this kitchen serves, the vegetables are taste tested and seasoned accordingly during the cooking process. Once the chef at hand gives the flavor a thumbs up, the mixture is cooked back into the metal pots and wheeled फिर to the इसके अंदर dining ले halls. जाते हैं। Bread is Yeah. essential to every meal. The bread department at the Shantivan complex can make up to ये तो भाई रोटी 26,000 नहीं है। flatbreads every hour. अच्छा ये इसलिए इसको कहते हैं ये रोटी अलग का। थेपला So, है। bakers ये first कुछ अलग pour टाइप 50 इसको kilogram थेपला bags of बोलते हैं। flour into mechanical sifters to remove large कैसा crumbs बनता of है यार? flour. मैं फर्स्ट तो ऐसे 200 kg आटा हमको 10 मिनट में ये मशीनें गूंद के देती है। गूंद The के sifted देती है। flour is then taken to mechanical mixers where different types of dough are made. Today, the bread department is making two types of flatbreads, chapatis and teplas. थेपला देखा? Tepla dough is made by combining water, whole wheat flour, turmeric, chili powder, मुख्तलिफ चीज़ों ground से बनता है। spinach, and fenugreek seed. तभी इसके बनाने का भी Once तरीका mixed, अलग है। the dough is wheeled to volunteers who use their hands to Tepla में roll पहली it दफा into देख रहा हूँ। precise हाँ, balls. ये भाई राजस्थान में बहुत खाया जाता हाँ। है। These balls are then brought to a team of 200 rollers who flatten them so they can be cooked. ये सारा वाह। Chefs rub the flattened teplas with ghee and slap them onto flat griddles to cook. Together, ये this मजे का team होगा can भाई। make 20,000 teplas an hour. 20,000 एक घंटे On the में। other हाँ। side of the bread department, machines are used to make chapatis without fillings. ये तो फौरन बन एक घंटे में 20,000। The dough chapatis is तो top free loaded form into बनती है, वो machines देखो which काट chop, काट के देखो, flatten, आटा and बस bake it रखते जाओ। into crispy chapatis. ये एक मशीन एक घंटे में 2000 चपाती अपने को बना के देती है। ऐसी 7 मशीनें अपने पास है, तो 14,000 चपाती ऐसी 7 एक घंटे में अच्छा, अच्छा। मशीन से 14,000 बनाई जाती चपाती है। एक घंटे में बनती है। टाइम लगता ही नहीं है। Like everything else that gets cooked here, the breads are placed inside metal containers to keep warm and wheeled to the dining halls for guests. In the dining halls, the rajma is served with rice, chapatis, Wow, and full bindi plate masala, बनती है a भाई। side dish made of okra and spices. अच्छा ऊपर राइस में डाल भाई के देते हैं। साहब, awesome यार, कितना During मेरे Baba मुंह में Milan, पानी the आ गया Hindu भाई। god Shiva, who is recognized as the father of souls, is believed to visit practitioners. तो बाबा मिलन का मतलब शिव बाबा हमारे यहाँ पे एक साकार मीडियम के अंदर साकार शरीर में आते थे। सब बाबा के बच्चे, बाबा का भंडारा है, वो भरपूर रहता है, कभी खाली नहीं रहता, सबके लिए फ्री। सबके Many of the लिए devotees have been coming here for years. 17 वर्षों से हम परमात्मा के साथ मिलन मना रहे हैं। हमें बहुत अच्छा यहाँ फील होता है। जिस सुख शांति के लिए लोग बाहर जाते हैं वो हमें यहाँ प्राप्त होता है। सिर्फ हम नहीं, यहाँ पर हजारों भाई बहन आकर लाभ लेते हैं। उसके पीछे के भाव है कि यहाँ हर एक व्यक्ति जो आ रहा है
वो अपने जीवन को श्रेष्ठ करने के लिए आ रहा है, मन की शांति के लिए आ रहा है। Imbuing the food with positive intention is one of the biggest responsibilities in the cooking process. तो जैसे हम सोचते हैं तो हमारी सोच से हमारी वृत्ति बनती है, और जैसे हमारी वृत्ति होती है वैसे वाइब्रेशंस बनते हैं। भोजन में वो वाइब्रेशंस बढ़ते हैं तो खाने वालों के ऊपर भी उसका इफेक्ट बनता है। ये जो भाव और भावना है यही इस भोजन को स्पेशल बनाते हैं। नहीं, भोजन बनता है तो यहाँ देखा जाता है कि ये जो भोजन हम बनाते हैं तो हमारा ये लक्ष्य रहता है कि ये भोजन खा के सब खुश हो जाए और हमको दुआएं दे। ऐसे ही तो यार वीडियो खत्म यार, मैं कहता हूँ मजा आ गया यार, सीरियसली गाइस मजा आ गया। 40,000 लोग डेली खाता है और ये लॉर्ड शिव के लिए मतलब ये मतलब जगह है बाबा मिलान उसको बोला जाता है कि मतलब लॉर्ड शिव किसी के अंदर आते हैं इस तरह मतलब इस तरह होता है और सालों से ये लोग कर रहा है। और भाई देखो 40,000 डेली लोग खा रहा है डेली। इधर मैं सच में कहता हूँ यार, इंडियन लोगों का दिल कितना बड़ा है। वो गरीब लोगों को जो होते हैं, जो इंडिया में कितनी जगह है, देखो जगन्नाथ टेम्पल, बाबा मिलान, ये तो भक्त खा रहे हैं ना। उधर गरीब लोगों के लिए भी 1 रुपए की थालियां बनी हुई है। उधर कभी क्या है कभी क्या, मतलब कोई भूखा नहीं सोता। भूखा इंडिया में नहीं सोता, इंडिया में कोई भूखा नहीं सोता। ये चीज है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भूखा इधर मुझे इतना मतलब ये होता है, इधर लोगों के पास है भी, लेकिन यार गरीब लोगों को आटे की लाइनों के लिए मार रहे हैं, आटे के लिए मार रहे हैं यार, मतलब लाइनों में लग के। और उधर गरीब लोगों को लोग भी दान करते हैं, ये नहीं कि दान नहीं करते, लेकिन इस लेवल का नहीं जो इंडिया में। लेकिन भारत का लेवल अलग है, इधर भी करते हैं यार, मैं इसमें कोई शक बहुत बड़ा लेवल है भारत का यार, बहुत बड़ा लेवल है। लेकिन एक जगह पे देखो 40,000 लोग खा रहा है, एक जगह पे डेली खा रहा है 40,000, यानी पेट भरता है एक मौके पर। अब खुद सोच लो फिर गोल्डन टेम्पल देख लो, फिर और खाना अगर इतने लोग हो ना तो खाना की क्वालिटी कम हो जाती है। लेकिन इधर क्वालिटी चेक करो, खाने क्वालिटी कितनी, हर चीज चेक की अच्छा जाती है। आपको राजमा के अंदर ज्यादा वो पानी वाला राजमा आपको नहीं लगेगा, गाढ़ा राजमा गाढ़ा मिलेगा। अच्छा सब्जी देखो इतनी कमाल सब्जी, हालांकि एक भी सब्जी बना सकते थे, को 5-6 तरह की सब्जियों से बनी। मैं वही कह रहा हूँ कि यार इंडिया में सिर्फ मंदिर और गुरुद्वारा और मतलब जो फ्री खाने वाले हैं ना, करोड़ों लोगों को खाने खिला रहे हैं। और हालांकि खाली चपाती भी दे सकते थे, लेकिन साथ ठेपला भी दे रहे। मतलब यार ये देखा जाए ना तो यार ये बहुत बड़ी बात होती है, किसी का एहसास करना। और एक और बात तुमने नोट नहीं की, इधर अगर कोई देते हैं ना फ्री खाना, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक चीज देंगे, सिर्फ एक चीज देंगे, या सालन होगा साथ में चपाती होगी, या सिर्फ चावल दे देंगे इंडिया में मुख्तलिफ चीजें साथ में देते हैं। मतलब हैरान हो जाता है यार, कितना दिल बड़ा है इंडिया के लोगों का। आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार